The Odisha High Court has recently sought a response from the state government over the continued vacancy of key posts in the Odisha Lokayukta. All positions including the Lokayukta chairman and members have remained vacant since August of last year, raising serious concerns over pending corruption complaints that remain unresolved and stalled. According to Section 6 of the Lokayukta Act, there should be one chairman and 4 members, with the appointment process starting 3 months before the expiry of the current member's term. However, human rights activist Prabir Das, who filed the petition, claims that the government has failed to initiate any such process and remaining on the back foot. The Odisha High Court has directed the state government to submit an affidavit within 2 weeks, clearly outlining the steps taken so far and provide a detailed time frame within a week to address specific queries. The next hearing in this important matter is scheduled after 3 weeks. At the time of reporting, no official comments have been received from the government authorities. Odisha Lokayukta August 2024 रु प्राय 1 वर्ष ऊर्ध्व है अचल ही रही कारण से अध्यक्ष तथा सदस्य पद भी खाली पड़ी या फल जो दुर्नीति अभियोग कर लोक मैंने द्वारस्थ होता लोकायुक्तर एभली गोटे गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान संपूर्ण पंगु हो तेणु सरकार को निष्क्रियता परिप्रेक्षी में ओडिशा लोकायुक्त को सचल करने तथा लोकायुक्तर अध्यक्ष तथा सदस्य पद भी पूरण करने निर्देश देवाई प्रार्थना करी हाईकोर्ट में एक जनस्वार्थ मामला रुजु करी आज ये मामलार शुणाणी करी मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन और विचारपति मानवर विचारपति जस्टिस एमएस रमण खंडपीठ आज सरकार को निर्देश देते जे लोकायुक्तर अध्यक्ष तथा सदस्य पदवी पूरण करने विषय कौन पदक्षेप नहीं दर्शाई 2 सप्ताह भितर एक सत्यपाठ दाखल करेंगे एवं जदि आवेदनकारी कौन प्रतिजवाब दाखल करिया थाई 1 सप्ताह मध्य करेंगे अर्थात 3 सप्ताह पर यह मामलार पुनर्वर्ती शुणाणी धार्य होइछि।